Hello everyone, my name is Dipendra and in this video we'll be discussing the most important questions of JEE Main's B.Arch paper 2 of the subject mathematics. Let's get started everyone. I hope you all can see a question is shared in front of you on the screen. Now, this is a question which is based on binomial theorem. Now, what are we given here? If for some positive integer n, the coefficients of three consecutive terms, so there are three consecutive terms in the binomial expansion of 1 plus x to the power n plus 5. Now the power is n plus 5, mind you everyone. R in the ratio 5 is to 10 is to 14. Then the largest coefficient in this expansion would be how much? I hope that's a pretty simple question. But before we discuss this question, let me tell you or give you the formula that x plus y when expanded when raised to the power n. So this binomial expansion goes like, I hope you know, the rth term. I'm directly going to talk about the rth term. So the r plus 1, I'm really sorry, the r plus 1th term is given by NCR, this x to the power n minus r and y to the power r. I hope all the students are aware of that. Now, if I use the same knowledge, same information here, this is what we are looking for. First of all, what I'm going to do is to avoid some redundancy, n plus 5 ko thodi der ke liye, can I consider capital N to just, keep it or make it a little simpler. So when you do so, what do you get? See, the coefficients, the three consecutive terms coefficient, right? Now, I hope you understand what is coefficient. This value is going to be the coefficient, because what do we have here? We have 1 plus x to the power capital N. So I have replaced small n plus 5 by capital N. So in this, term, if I write three terms, which three terms? Rth term, r plus 1th term and r plus 2th term. They are in the ratio 5 is to 10 is to 14. I hope you're getting that. Now, when you use that particular information, what do you get? Rth term will be given by, or rather I'm just going to write the coefficient. So I'm not writing everything. I'm writing the coefficient, right? So the coefficient of rth term is going to be NC. Now I'm going to use the capital N, right? So capital NC. Well, if it was r plus 1, here we write r. So if it is r, I should be writing r minus 1. I hope you're getting that comfortably. Along with that, if I talk about this coefficient, this is going to be NCR. And what about this coefficient, online students? That is going to be capital NCR plus 1. Now, what are we told here? That this upon this ratio is going to be 5 is to 10. So let me just use this information and try to solve this question here. So what I am going to write is, can we first of all, simplify this NCR minus 1? I hope you know the formula of NCR is given as n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Now this particular information I'll be using here. So NCR minus 1, I'll be writing as capital N factorial upon capital N minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial. Similarly, when you expand this I'll be writing as n factorial upon capital N minus r factorial into r factorial, right? Similarly, when you simplify or expand this gets expanded like this, that I will be writing it as n factorial upon n minus r, now minus 1 factorial into r plus 1 factorial. I hope you all have understood that. Now, if you try and cancel things here, see, NCR minus 1 upon NCR, right? This is the first ratio we are given. That ratio we are given is 5 is to 10. Now, if you simplify that ratio, are you realizing that this n factorial cancels this n factorial? Not just that, one more thing you get is n minus r plus 1, right? I hope you're realizing what I'm trying to convey here. N minus r plus 1. When you simplify this, see, I'm going to write it first of all. N factorial gets cancelled by n factorial. What I am writing here is, let me just simplify this so that you don't get confused. So I'm going to write NCR minus 1 upon NCR, which we are given as 5 is to 10. So if I were to simplify this, how will I be writing it? I'll be writing 5 by 10 is 1 by 2 is equal to this expression. See, यहाँ पे these numerators are getting cancelled by each other. So ये जो denominator है हमारा, this will come in the numerator. So I'll have this n minus r factorial in the numerator into r factorial divided by this denominator will go in the denominator. So it will be written as n minus r plus 1 factorial upon r minus 1 factorial. Now I hope from here you can very easily figure out what are we going to do next. See, this 1 by 2 I'll have as it is equal to, see, can I write n minus r as n, see, can I write this term n minus r plus 1 as n minus r plus 1 into n minus r factorial? I hope we all know that r factorial is nothing but r into r minus 1 factorial. That particular formula I'm going to use here.
So that when I write as, so n minus r factorial in the denominator will get cancelled by this numerator. And similarly, what are we going to do with r factorial? Let me just write this part first so that you don't get confused. In the numerator, I'll have 1. In the denominator, I'll have n minus r plus 1, right? In the numerator, this r factorial I'll be writing as r into r minus 1 factorial. That r minus 1 factorial will get cancelled by this. In the numerator, it will be 1 into r. I hope you can simplify this and create one equation in n and r. So when you simplify this, it is n minus r plus 1 is equals to 2r. And when you simplify this further, what you get is 2r when you bring either of these sides. So it is going to be n minus 3r plus 1 is equals to 0. Well, that's the first equation we have gotten in n and r. Now, when you proceed further, we had one more ratio. That second coefficient, this second term and third term ka ratio was 10:14. I hope you know what is 10:14. 10:14 is clearly 5:7, and that ratio is going to be this value upon this. What are we having here? We are having NCR upon NCR plus 1. Now, I hope I need not tell you this again. 10:14 is going to be 5:7, and when you write this, I'm going to cancel this here only. So pay attention, everyone. Again, this numerator n factorial gets cancelled by this n factorial. The same thing we'll do here. See, this denominator will come in the numerator, and this denominator will stay as the denominator. So I'll be writing it as n minus r minus 1 factorial into this here. We have r minus 1 factorial. Just give me a second, everyone. So this will be r minus 1 factorial divided by this denominator, right? NCR wala. So that is clearly n minus r factorial times r factorial, right? I hope you have understood this much part. Now, when you simplify this further, what do we get? See, n minus r factorial I can write as n minus r into n minus r minus 1 factorial. That will get cancelled by this. The same I'll do with this. R factorial I'll write as r into r minus 1 factorial. That r minus 1 factorial will get cancelled by this. So simply, this 5/7 can be written as C. I hope this is getting cancelled by the denominator wala part. So here, numerator will have something, but let's talk about the denominator first. I'll have n minus r only, क्योंकि इसके बाद वाला जो factorial होगा वो इससे cancel हो जाएगा, right? Similarly, यहाँ पे r minus 1 factorial यहाँ से cancel हो जाएगा. It will be just 1 upon r. I hope you have understood how has it happened, right? Now, when you do this cross multiplication thing, what do we get finally? See, this will be, I hope I haven't made any mistake. Let me just recheck all the operations I have done so far. So it was n minus r plus 1. I think we are going great. N minus r plus 1, right? Let me just recheck this. I hope I haven't come, because what is confusing me here is क्योंकि quadratic जैसा कुछ convert हो रहा है. Although it's okay to have this quadratic, but let me just recheck कि कोई गलती तो हमने नहीं की, क्योंकि यहाँ पे we got this equation as a linear equation n minus 3r plus 1. So let's quickly recheck this, everyone. What do we get here? Okay, so what I have just realized that I have taken the wrong coefficient. So let me just recorrect that. See, what do we have here is we have this n minus r into r factorial. Well, that should not be used. What do we have here? We have something different. Let me just redo this part, this 5:7 wala part, so that you get it more clearly, right? Let me just rewrite it. एक यहाँ पे गलत है. This thing I have written mistakenly. So what do we have? 5:7. This term, this term, I'm just highlighting it. This term upon this term. So let me just recorrect that part. So see, I hope you're realizing this n factorial gets cancelled by this n factorial. So this particular thing goes in the numerator and this stays in the denominator. So numerator will be this, जो मैंने गलत लिख लिया था. So I'm recorrecting it. So it is going to be n minus r minus 1 factorial into r plus 1 factorial, right? Divided by this denominator, n minus r factorial into r factorial. So it will be capital N minus r factorial into r factorial. That's why I thought that there is something wrong here. I think I have written it properly right now. Now, when you simplify this, what do you get finally? See, I'm retelling you this thing that n minus r minus 1 can be written as, I'll keep it as it is, n minus r, I'll write as n minus r into n minus r minus 1, right? So when that factorial will get cancelled by this, so in the denominator I'll have n minus r. What will I have the numerator? This is r plus 1 factorial, so it will be r plus 1 into r factorial. So r factorial से r factorial cancel हो जाएगा, and then the numerator will have r plus 1, which is equal to 5/7. Now that looks like a linear equation. That's why I got a little confused that what mistake did we commit. तो हमने बस कुछ coefficients गलत लिख लिए थे, and that's why I was getting a wrong or a different kind of an equation, right? Now,
and you do the cross multiplication thing. 7 into r is 7r plus 7, and this will be 5n minus 5r. So when you simplify this further, what do you get from here? 5n minus 7r, it should not be minus 7r. 7r and 5r जब add किए तो it should be minus 12r. Minus 7 is equals to 0. So that's the different or another equation you have gotten. Now what were we asked? The largest coefficient. So to figure that out, I need to have this n and r first of all, or rather at least this capital N, so that we can figure out कि इसकी value क्या होगी. So अगर मैं n की value figure out करना चाहूँ, so here we have 3r and here we have 12r. So what I am going to do here is मैं ये first equation को I'll multiply by 4. And why am I doing that? I hope you must have realized that very clearly. So this second equation here, this was your first equation, this is your second equation. So first equation, if I multiply it by 4, this is going to be 4n. I have just done this multiplication thing here, so मैं यहीं लिख दे रहा हूँ सीधे. So this is going to be 4n, this will be 12r, this will be 4. And when you add, or rather when you subtract, so minus, plus, and this will be minus, right? I hope this is not very confusing to you all and you are able to understand. And when you finally add this, 5n minus 4n is going to be n. This I believe was 4, right? Let me just recheck it. This was 1, but 1 को जब 4 से multiply किया तो 4 और negative sign के साथ होगा. And 5n minus 4n is n. 12 and 12r cancel. तो minus 7 minus 4 is minus 11. जो उधर जाएगा तो 11. So n का value 11 आता है. Now pay attention. Capital N यानी the power. क्योंकि n plus 5 की value is n, capital N, right? So basically हम जिस term को expand कर रहे हैं, जो binomial expansion हम लिख रहे हैं, that is 1 plus x to the power 11. I hope you know the largest coefficient is going to be the middle term. I hope you know कि अगर power 11 है तो total number of terms होंगी 12, और total number of terms में जो middle term होगी, जो sixth term होगी, that will be having the largest coefficient. I hope you all know that, right? It could be either fifth term or sixth term. So let's write the sixth term. Either you write it as 11c5 or 11c6. Either of them is going to be correct. So either sixth term or fifth term, दोनों के coefficients equal or largest होंगे. On that basis, I can write the largest coefficient will be 11c6, और 11c6 या 11c5 को जब आप expand करेंगे, I'll treat it as 11c5. 11c5 is going to be 11 into 10 into 9. ये थोड़ा सा tricky part है, मतलब calculation wise थोड़ा सा cumbersome है. 6 into 5, right? Divided by 11c5 should be. I hope you know this basic trick of expanding it. 11 को मैंने 5 terms तक reverse में expand किया. So 11 into 10 into 9 into 8 into 7. 5 reverse term, और 5 को 5 into 4 into 3 into 2 into 1. I hope you can see this clearly. 4 into 2 is 8. 3 का 3 times is 9 and 5 का 2 times is 10. So by multiplying this thing, I hope you all can do this very clearly now. 11 into 2 into 3 into 7, you will get the answer by yourself. So that will be the correct answer. More importantly, through this question, I hope you all must have understood few things we have tried to work out. First of all, I hope you know how to expand the binomial term, or rather binomial expansion में r plus 1th term कैसे लिखी जाती है. 3 terms हमने consecutive कैसे consider की, उनके coefficients कैसे लिखे, और उनके coefficients का जो ratio हमें दिया गया था, वो ratio के according हमने n और r में कैसे equations बना के n की value work out किया. I hope you realized r की value निकालना is not needed. हमसे वो 3 consecutive terms नहीं पूछे गए, हमसे पूछा गया है largest coefficient. Well, अगर आप power work out कर लेते हैं कि उस binomial expansion में power क्या है, उस बेसिस पे आप नंबर ऑफ टर्म्स n+1 यानी एक ज़्यादा टर्म होती है वो वर्कआउट कर सकते हैं. और उससे एग्जैक्ट अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आप मिडिल टर्म 2 आएंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो मिडिल टर्म एग्जैक्टली 1 आएगी, और दैट टर्म विल बी हैविंग द लार्जेस्ट कोफिशिएंट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एवरीवन. विद दैट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now here, that's a very simple question which you all should pay attention to. That's a very easy and a very brilliant question. So what are we given? That, let me just paste this question in front of you first of all. I was just seeing the screenshot of the image or the question basically. So here is the question. What are we told here? Contrapositive. Now I hope you understand, as soon as you read this term, you should realize that this is a question based on mathematical reasoning. Well, you need to understand कि जैसे अभी बाइनोमियल से हमने एक क्वेश्चन देखा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है. सिमिलरली मैथमेटिकल रीजनिंग से यू नीड टू अंडरस्टैंड one question is definitely going to be asked, and this is one of those easiest chapters which you can very easily learn and get +4 marks in JEE Mains paper 2 for B.Arch examination. Now contrapositive the statement का मतलब होता है अगर मुझे एक स्टेटमेंट दिया जाए P और अगर वो Q को इम्प्लाई कर रहा है, मतलब if P then Q, so whenever P happens then Q has to happen. That's the condition here. I hope you know how to do it. So contrapositive of this statement is given by negation of Q implies negation of P. I hope you are realizing what I'm trying to convey here.
एंड दिस ऑलवेज स्टेज ट्रू. अगर p q को इम्प्लाई करता है, मतलब अगर p के होने पर डेफिनेटली q की हैपनिंग होती है, देन नेगेशन ऑफ q विल ऑल्सो ऑलवेज इम्प्लाई नेगेशन ऑफ p. यानी q के नहीं होने पर डेफिनेटली p भी नहीं होगा. दैट इज व्हाट यू कैन ऑलवेज क्लेम एंड से. और इस बेसिस पे अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करूँ, सो व्हाट आर वी गिवन? इफ अ फंक्शन f is differentiable at a, then it is also continuous at a. So p, what is p? P is f is continuous, right? And what is q? Q statement is, then it is the function f is differentiable. I'm really sorry, मैंने उल्टा लिख दिया class, so I'm just rewriting it. वो कह रहा है if a function is differentiable, so f is differentiable. That's your statement p. And what is your q statement? Then it is also continuous at a. So f is continuous. These are two statements. So अगर p implies q, these are the two statements. तो इसका contrapositive will be negation of q will imply negation of p. On that basis, what you are going to write is negation of q, right? So f is continuous का negation is f is not continuous. So negation of q, if f is not continuous, then p is differentiable का negation is f is not differentiable. और अगर मैं ये ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करूँ, so I think option 1, if a function is not continuous at a, if a function is not continuous, then it is not differentiable at a. So that's the correct answer. You should be marking option A. I hope you must have realized कि ये चैप्टर बहुत आसान है और यहाँ से आप क्वेश्चंस बहुत easily वर्कआउट कर सकते हैं, right? Let's try another question then, everyone. I hope you all can see the next question right there on the screen. Let's try and solve this together. So what are we given? The circle passing through the intersection of the circles, and this circle having its center on this line also passes through the point. Now what are we told? एक सर्कल है जो दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से पास होता है. आई होप यू नो हाउ टू राइट दिस. अगर सर्कल 1 की इक्वेशन है S1 और अगर सर्कल 2 की इक्वेशन है S2, सो वो सारे इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन जो इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं इज गिवन बाय S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल्स टू 0. आई होप दैट बेसिक इज क्लियरली नोन बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स. So when I write it, this is S1 and this is S2. It is going to be x square plus y square minus 6x, and here this is going to be lambda times this S2, which is going to be x square plus y square minus 4y is equals to 0. Now this is the combined equation of the family of circles which are passing through the intersection of these two circles. Now if I simplify this, or rather if I try to figure out the center's coordinate, तो वो क्या होंगे? Let's pay attention to that. See, यहाँ से एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो दैट विल बी 1 प्लस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर, राइट. सिमिलरली अगर मैं वाई स्क्वायर को वर्कआउट करूँ, सो दैट विल बी 1 प्लस लेमडा टाइम्स वाई स्क्वायर. आई होप यू ऑल कैन सी दैट वेरी क्लियरली. देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव माइनस 6x एंड वी हैव माइनस 4 लेमडा टाइम्स वाई. वेल, आई कुड हैव कॉल्ड इट अ सर्कल्स इक्वेशन अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होते हैं. सो 1 बनाने का तरीका आसान है. मैं पूरी इक्वेशन को 1 प्लस लेमडा से डिवाइड कर सकता हूँ. तो जैसे आप 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इट विल बी 1 प्लस लैम्डा एंड दिस विल ऑल्सो बी 1 प्लस लैम्डा. आई होप यू हैव रियलाइज्ड व्हाट आई हैव जस्ट डन. और ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस हमने नहीं किए हैं, राइट. सो आई होप यू रियलाइजिंग द ओनली चेंज आई हैव मेड इज मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया है, राइट. नाउ आई होप यू नो, अगर एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आर -g, -f, राइट. तो अगर मैं यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो जो x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है, उनके नेगेटिव हाफ में ले लूंगा. सो -6 अपॉन 1 प्लस लेमडा का नेगेटिव विल बी 6 का हाफ विल बी 3. सो इट शुड बी 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा, क्योंकि मैंने नेगेटिव भी लिया है. और अगर यहाँ से लें तो इट शुड बी 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ what are we additionally told in this question? that circle, जो specific, जो unique circle है, जिसको specifically ये question define कर रहा है, in that circle उसकी जो center है, that center lies on this line. Shall I say, अगर ये center के coordinate इस line पर lie करते हैं तो they must satisfy this equation of straight line. यानी कि 3 upon 1 plus lambda and 2 lambda upon 1 plus lambda should be replaced at place of x and y. So this is going to be 2 into 3 upon 1 plus lambda minus 3 into 2 lambda upon 1 plus lambda plus 12 is equals to 0. So this is how I am trying to figure out the value of lambda. When you simplify this further, what do you get? Just pay attention everyone. 1 plus lambda, 1 plus lambda, यहाँ भी 1 plus lambda से multiply करेंगे. So this will be 6 minus 6 lambda plus 12 into 1 plus lambda. So that will be 12
plus 12 lambda which will be equal to 0. और अगर यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँ तो lambda 12 lambda minus 6 lambda 6 lambda 12 plus 6 is clearly 18, so that is minus 18, right? तो lambda की वैल्यू यहाँ से आती है -3. What is the advantage of having the lambda's value? See, lambda की जब आपको वैल्यू मिल गई है तो अगर आप उसे यहाँ रिप्लेस कर देंगे so you'll get the equation of the unique circle, जो आपका आइडेंटिफाइड सर्कल है जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, उस यूनिक सर्कल को आप डिफाइन कर पाएंगे. तो लैम्डा का वैल्यू हम गोइंग टू रिप्लेस हियर. मैं थोड़ा सा इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड this lambda का वैल्यू. चलो, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट ऑन द नेक्स्ट पेज. जस्ट गिव मी अ सेकेंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स. So here basically when you put this value, see lambda ka value -3 we are going to put in this equation. So the equation of the circle becomes c x square plus y square. Now minus 6x, right, and -3 plus 1 which is -2. So -2 से जब 6 को divide किया so that is 3x. Similarly -2 से -4 को divide किया so that is 2y is equals to 0. अब वो पूछ रहा है that this circle passes through which point. तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है क्लास, सारे ऑप्शंस 1 by 1 ट्राई करिए. जैसे -1, 3 अगर ट्राई किया तो -1 अगर ट्राई किया तो -1 का स्क्वायर इज +1. आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू डायरेक्टली. 3 ट्राई किया तो ये हुआ 9, ये हुआ -1 इंटू 3 -3, और ये 3 ट्राई किया तो 6. आई होप यू आर सीइंग इट क्लियरली. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. लेट्स चेक इट फॉर ऑप्शन बी. व्हाट आर वी गिवन इन ऑप्शन बी? -3, 6. सो -3, 6 -3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर इज 36, 3 का -3 into 3 is -9 and 6 into 2 is 12. I hope हमने सही वैल्यूज रखी हैं. -3, 6, राइट. मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? लेट मी जस्ट चेक इट अगेन. लैम्डा का वैल्यू जब -3 रखते हैं तो दिस इज -2. तो -2 का 4 टाइम्स. आई एम रियली सॉरी, मैंने एक गड़बड़ की यहाँ पे. लैम्डा की ये वाली वैल्यू आई डिडंट पुट. आई एम reiterating my words. This lambda I forgot to take care of. So when you simplify this further, थोड़ा सा इस इक्वेशन को फिर से लिख लीजिए क्लास. There is only one change we'll do, that let me just redo this correction here. So when you replace this value, देखो ध्यान से, lambda this is going to be x square, this is going to be y square. Now this is going to be 1 plus lambda. So -3 plus 1 is -2. -2 का -6 is 3 times. So that is going to be plus 3x. First of all, I hope you're realizing that, right? Now यहाँ पे जब आप रिप्लेस करेंगे सो -3 plus 1 -2 into -4, -4 by -2 is going to be +2, but +2 into -3 is going to be -6, so that is going to be -6y is equals to 0. Now when you put this equation or option 1 -1, 3, so -1 जब रखा तो +1, 3 का स्क्वायर 9, -1 यानी -3, और ये 6, राइट. तो what was the value? 3 into 6 is -18, and that clearly is not turning out to be 0, so option A is rejected. -3, 6, जब आप -3, 6 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर इज 9, 6 का स्क्वायर इज 36, -3 into 3 is -9, and 6 into 6 is -36. I hope you're realizing this equation is turning out to be equal to 0. That means ये satisfy करेगा हमारे सर्कल को, यानी ऑप्शन B should be the correct answer. I hope you must have understood कि क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, and you are getting the clarity कि किस तरह के बेसिक्स से सवाल पूछे जाएंगे जिनके लिए बहुत बेसिक से फॉर्मूले पता होना is needed. So here we have the next question for the day. Pay attention all the participants. That's again a very simple question. What are we told? That if the angle of elevation of a cloud C from point P 200 meter above is a still lake is 30 degree. Now what are we told? That there is a point C basically a cloud जिसका from a point P, तो P is a point in the lake or on the lake. तो P से C का जो angle of elevation है that is 30 degree. I'll work that out for you. Draw the diagram. I'll draw the diagram. Then if the angle of depression of the image of C in the lake from the point is 60 degree, तो C का जो image है in the lake, उस point का जो angle है, angle of depression from again the same point P is 60 degree. तो PC की वैल्यू पूछ रहा है. आई होप यू आर रियलाइजिंग कि वो क्या पूछ रहा है. इफ यू हैवंट अंडरस्टूड इट, लेट मी जस्ट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. सी, देयर इज दिस पॉइंट P, राइट. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड C फ्रॉम अ पॉइंट P, राइट. सो देयर इज पॉइंट P जहाँ से ये C का एंगल ऑफ एलिवेशन इज क्लियरली कितना? 30 डिग्री. सो दैट एंगल इज 30 डिग्री. आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट. 200 meter above a still lake is 30 degree. So point P के basically 200 meter ऊपर. I'm really sorry. This is point not P. This is point different point. Let's call it Q. P एक point है
या बेसिकली एक लेक है, उस लेक से ऊपर, इसको और थोड़ा सा करेक्ट करते हैं क्लास, देयर इज दिस लेक, इस लेक के ऊपर, दिस इज दैट लेक, राइट। नाउ 200 मीटर अबव ऑफ दिस लेक देयर इज अ पॉइंट P, और उस पॉइंट P से इस क्लाउड C का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। व्हाट आर वी आल्सो टोल्ड इज दैट इस C का एक इमेज बन रहा है, इस C का मिरर इमेज बन रहा है। वेल दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट P इन द लेक, राइट। तो जो C का इमेज है, लेट्स कॉल दिस C डैश, ये जो इमेज है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट P। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गोइंग टू बी दिस एंगल, एंड दैट एंगल इज नथिंग बट 60 डिग्री। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। नाउ व्हाट आर वी आस्क्ड फाइनली, दैट्स द क्वेश्चन। वो PC की लेंथ पूछ रहा है। PC मीन्स दे आर आस्किंग यू दिस लेंथ, कि उस P पॉइंट से इस क्लाउड की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, दैट्स व्हाट यू आर आस्क्ड। नाउ आई होप दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड थ्रू द डायग्राम कि क्या क्या चीज़ें करने की जरूरत है। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द इन्फॉर्मेशन कन्वेड सो फार। अगर मैं चीज़ें और थोड़ी सी वर्कआउट करूँ, सो कैन आई से लेट मी कॉल दिस पॉइंट A एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट B। एवरीवन विद मी सो फार? नाउ कैन वी फर्स्ट ऑफ ऑल से, थोड़ी देर के लिए देखो, हमें PC पता करना है, ये एंगल 30 डिग्री पता है। कैन आई कॉल दिस लेंथ PA लेंथ? आई होप यू आर सीइंग PA लेंथ। कैन आई कॉल दिस लेंथ X फॉर अ व्हाइल टू मेक यू अंडरस्टैंड? नाउ इस ट्रायंगल PAC में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सो आई एम गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल PAC, राइट। कैन आई से इन ट्रायंगल PAC this PA we have, I hope you all can see this, and we have this AC। अगर मैं हाइट वर्कआउट कर लूँ तो बहुत हद तक चीज़ें पता की जा सकती हैं। देखो ध्यान से, अगर ये लेंथ हमने X एज्यूम की है तो आई थिंक ये हाइट पता की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल। नाउ इफ आई ट्राई टू डू सो, हाउ डू वी डू दैट? एवरीवन पे अटेंशन। कैन आई से दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज द एंगल, सो 1030 is going to be AC upon PA। I hope you are realizing why are we doing that or how are we doing that. So can I say the value of AC is going to be PA into 1030? What is the value of PA? PA we have assumed as X, and 1030 we all know is 1 upon under root 3, so that is X by root 3. So this AC is going to be X by root 3. I hope you have understood that. Any confusion so far? Now can I say, if I just try to work out this distance, let me just highlight this distance I'm talking about, this distance AC dash. Now if I just try to highlight this distance, can I say AC dash is nothing but AB plus BC dash? I hope you are realizing that. Can I say, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्लास, बहुत बेसिक सी बात है। See, AC dash can I write as AB plus BC dash? Now do we have the value of AB? Pay attention everyone. AB is nothing but what? See, अगर इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कहूँ, let me call it ABCD. So PD and AB will have equal length. I hope you're realizing why. क्योंकि जो P point था वो लेक से, एक प्लेन स्टिल लेक से 200 मीटर अबव था, सो ये जो पॉइंट AB है, that distance will be clearly be 200, right? So अगर मैं AC dash लिखना चाहूँ, so AC dash will be AB plus BC dash. I hope you are understanding that very clearly. Now I hope in this AC dash, अगर मैं AB को लिखना चाहूँ, so that is 200. तो can I say AC dash would be 200 plus BC dash? I hope no one is confused with this much information conveyed so far. But can I say, बहुत बेसिक सी बात है, pay attention everyone, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी पॉइंट से, everyone please pay attention, अगर किसी पॉइंट से P से यानी लेक से जो डिस्टेंस इस पॉइंट C की है, लेक से जो ये डिस्टेंस इस पॉइंट C की है, वही can I say डिस्टेंस इसकी होगी। I hope you are understanding my point here everyone, all the participants. तो can I say, ये जो distance BC है, the distance for this BC dash will also remain same. Why am I saying that? क्योंकि ये लेक से उतना ही ऊपर है जितना नीचे, क्योंकि ये mirror image है, this is the water image, right? Water image में the point remains quite simple कि जो ऑब्जेक्ट का आप इमेज देख रहे हो वो इक्वी डिस्टेंट होगा उस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से जहाँ से वो उसका इमेज क्रिएट हो रहा है, जिस पॉइंट से के रिस्पेक्ट में उसका इमेज क्रिएट हो रहा है। तो कैन आई से फर्स्ट ऑफ ऑल दैट BC dash is nothing but BC. I hope this much information is clearly understood by all the participants. Now अगर मैं यहाँ पे ये हमारे इस ट्रायंगल की बात करूँ, C dash P और A, और अगर यहाँ से मैं चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो बहुत ध्यान से सुनेंगे all the participants. I am going to write or consider the triangle C dash P A. I hope you are realizing that. So when you work out this triangle C dash P A, now again in this triangle C dash PA, can we work out this length AC dash in terms of X? I hope you're realizing again this AP is same. So can I say again 1060 degree? Mind you everyone, 1060 degree. Can I say 1060 degree would be nothing but AC dash upon AP? I hope you're realizing that
1060 angle, perpendicular and base. This is again a right angle triangle, right? So it will be AC dash upon AP. Now 1060 we all know is going to be under root 3, so this is going to be under root 3. Now what is AC dash? We don't know so far, but can I work out this distance 200 plus BC dash? क्योंकि हमने AC dash की value इस term में निकाली है. That is clearly going to be, I hope that is 200, right? We are given it as 200. So that is going to be AC dash, I'm going to write as 200 plus BC dash divided by this length AP, and AP we have just assumed as X. So this is going to be the value, right? Now from here, if I have this much information, can I use some more information? What I am going to tell you from now here is, अगर मैं triangle APC के अंदर था, what have we finally asked कि PC का length कितना है? I hope you're realizing what is PC. This length we are asked, right? Now by just writing this particular equation, which equation class? We have the value of BC, right? What is AC? AC is nothing but, अच्छा मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ. Can I write BC? BC will be nothing but what? This is 200, right? तो अगर मैं BC लिखना चाहूँ यहाँ से, from here, so BC would be nothing but this 200 plus x by root 3. I hope you are realizing why am I saying that. ये 200 और ये height हमने figure out की. I hope you understand ये basic property जो मैं शुरू से highlight कर रहा हूँ, that BC dash और BC equal होंगे. From here, can I write the value of BC dash? BC dash is going to be nothing but, ध्यान से सुनेंगे, under root 3x minus 200. I hope everyone has understood that part. I repeat my statement. BC dash is going to be under root 3x minus 200, and this we have evaluated as BC, and we all know that BC and BC dash will be equal क्योंकि ये lake का वो mid point है जिसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट है कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे और उसकी इमेज है वाटर इमेज कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, और दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, यानी BC डैश और BC विल बी इक्वल, राइट? नाउ BC डैश और अगर मैं BC को इक्वल रखूँ तो यहाँ से आई होप आई कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ x. नाउ हाउ डू वी डू दैट? दिस इज 200 प्लस x बाय root 3, that's the value of BC. BC dash is going to be under root 3x minus 200. Under root 3x I'm taking on the other side, or rather 200 I'm taking here, x by root 3 I'm taking here. So this is 400 is equals to under root 3x minus x by root 3. I hope we are doing correct. Now अगर इसे मैं simplify करूँ, what do I get? 400 is equal to root 3 into root 3 is 3. So this is 3x minus x divided by under root 3 is equal to 400. That is going to be 2x, right? So this is going to be 2x under root 3 को इधर लिखे गए तो 400 times root 3. So x का value turns out to be 200 root 3. Well, that's not the answer. Why am I saying that, everyone? Please pay attention. We are asked the value of BC. We have just figured out the value of x. ध्यान से सुनिए क्लास. x अगर 200 root 3 है तो x by root 3 is going to be clearly 200 root 3 upon root 3, so that gets cancelled. So x का value मतलब this length AC turns out to be 200. I hope you have understood why. I repeat, x का value था 200 root 3, so root 3 से root 3 cancel, तो x by root 3 यानी AC की value आती है 200. Now that's a very simple question. See, हमारे पास AC पता है, हमको PC पता करना है. Anyway, आप यहाँ PSA भी पता कर सकते थे. Well, that would have not mattered much. जैसे भी ठीक लग रहा है करिए. So I have perpendicular and hypotenuse. तो जब आप perpendicular और hypotenuse से deal करते हैं, I hope you understand you have to deal with sin theta. So sin 30 is going to be perpendicular. Perpendicular we all know is 200, and hypotenuse we don't know. That's exactly which we are supposed to figure out. Sin 30, I hope I need not remind you, is clearly 1 by 2. This 1 by 2 is equals to 200 upon PC. आप PC को इधर ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए, so that turns out to be 400. I repeat, what we have done so far is we have used few information. First of all, diagram में थोड़ा सा confusion मत create करिएगा. Lake से 200 मीटर एक ऊपर point है, वहाँ से एक cloud का angle of elevation 30 डिग्री दिया है, और उसी point से उस lake के respect में cloud के image का point of depression, angle of depression दिया है 60 डिग्री. So पहले आप ये वाला triangle यूज़ कर लीजिए, फिर ये वाला triangle यूज़ कर लीजिए. दोनों के बीच में ये point common है कि जो वो line पास हो रही है उस क्लाउड और उसकी इमेज को कनेक्ट करने वाली लाइन, उसका डिस्टेंस और उसका डिफरेंस सेम है जो डिस्टेंस है. इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की कि उस लेक से उस क्लाउड की डिस्टेंस और उस लेक से उसके क्लाउड के ऑब्जेक्ट मिरर इमेज वाटर इमेज की डिस्टेंस विल बी इक्वल. बस ये प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके यू कैन वर्क आउट द distance between the point P and the cloud. I hope that was again a very simple question which you all must have understood. With that, let's try another question. Now that's again a very simple topic and a very easy topic जिस पर questions पूछे जाते हैं, that's limits and continuity and differentiability. So rather this is not just a question which is based on continuity or differentiability.
or limit, but it uses the concept of differential equations or rather integration. And then finally, it is a combination of a lot of topics basically. So let's try and solve this question together. First of all, what are we given? We are given this function, right? So the function reads as limit t approaches x. Now mind you everyone, उसने confuse करने के लिए यहाँ पे t को वेरिएबल लिया और x को एक वैल्यू लिया है, राइट? सो वी आर गिवन t स्क्वायर f स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर f स्क्वायर t डिवाइडेड बाई t माइनस एक्स. अब एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको रियलाइज हो रही होगी कि जब आप t को x से रिप्लेस करते हो, व्हाट इज द क्वेश्चन? जीरो से इन्फिनिटी तक डोमेन है, जीरो से इन्फिनिटी तक ये रेंज है, मतलब पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट करता है. डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूस तो ऑब्वियसली होगा. f1 की वैल्यू e दी गई है और इस लिमिट की वैल्यू हमें 0 दी जा रही है. विल वर्क दैट आउट. और fx इज इक्वल टू 1 दिया है, तो x की वैल्यू वो फाइनली पूछ रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये 1 है. सो x हियर इज अ कांस्टेंट. आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड. x यहाँ पर कोफिशिएंट है और t एक वेरिएबल है. इफ आई रीटरेट माय वर्ड्स, ये हमें कुछ ऐसा दिया है. आप एक काम करिए क्लास, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली t को x से रिप्लेस करिए. तो जब यहाँ पे t को x से रिप्लेस किया, सो दिस इज x स्क्वायर f स्क्वायर x, दिस इज x स्क्वायर f स्क्वायर x अपॉन t को x से रिप्लेस किया, तो दिस इज x माइनस एक्स. आई होप रियलाइजिंग ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये भी आइडेंटिकल. सो दिस इज गोइंग टू बी अ 0 by 0 फॉर्म. आई होप आई नीड नॉट टेल यू, as soon as you have a 0 by 0 form, what do you think of using is L'Hopital rule. Now what does L'Hopital rule say? Pay attention everyone. L'Hopital rule says कि अगर जब भी आपको 0 by 0 या infinity by infinity फॉर्म मिलती है, तो आप न्यूमरेटर को सेपरेटली और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करिए और फिर लिमिट रखिए. और अगेन अगर आपको 0 by 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिलती चली जाती है, तो तब तक डिफरेंशिएट करते जाइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली. यू विल गेट द आंसर फाइनली. सो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ, माइंड यू एवरीवन, यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल x नहीं होगा, वेरिएबल t होगा, क्योंकि आई होप यू आर रियलाइजिंग यहाँ पे वेरिएबल t है और कांस्टेंट x है. सो टू कंफ्यूज यू, दे हैव गिवन इट इन अ डिफरेंट मैनर. सो दिस इज द इक्वेशन और दिस इज द फंक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. सी what do we have here? Just let me scroll it down a little. So t square का differentiation, f square x constant होगा, so t square का differentiation will be 2t. 2t is going to be the differentiation. F square will remain or stay as it is. X square constant term है, तो x square will remain as it is. F square t का differentiation will be 2ft. By using this logic of composite function or chain rule, ft का differentiation will be f dash t. So I hope you are comfortable so far. Similarly, जब आप denominator में differentiate करेंगे, so what will you have? t का differentiation will be 1 and x constant है, mind you everyone, x constant है, तो x का differentiation will be 0. So this will be 1 and this we are given as equal to 0. क्या? जब आप limit t approaches x यूज करते हैं. I hope this much part is clearly understood by all the participants. और जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, so what do you get finally? See, अगर मैं 1 को उधर मल्टीप्लाई करूँ और जो वैल्यूज रिप्लेस करूँ, so what do I get here? See, t को x से रिप्लेस किया, so this is 2x f square x माइनस, और रादर इस माइनस को उधर लेके गया, इस पूरी टर्म्स को उठा के इधर ले जा रहा हूँ क्योंकि 1 into 0 तो 0 है. सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी एक्स स्क्वायर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज एफ टी डॉट एफ डैश टी. सो कैन आई राइट इट एज एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स. आई होप यू आर कंफर्टेबल सो फार. अगर अब मैं चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करूँ, एक और चीज़ हमें दी गई है, पे अटेंशन एवरीवन. f1 की वैल्यू e दी है, जो हम फाइनली जब हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब फिगर आउट करेंगे तब यूज़ कर लेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट fx की वैल्यू 1 है तब जब x की क्या वैल्यू है वो ये पूछ रहा है. इसके अलावा पे अटेंशन एवरीवन, अगर मैं यहाँ से f of x थोड़ी देर के लिए कॉमन लूँ तो देखो क्या बन रहा है. अगर f of x कॉमन लिया तो ये बन जाता है 2x f of x, और यहाँ से f of x कॉमन लिया, आई थिंक 2 of x भी कॉमन ले ही सकते थे, तो 2x भी कॉमन ले लेते हैं क्लास, तो ये और सिंपल हो जाएगा. अगर मैंने 2x भी कॉमन लिया, देखो 2x और 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है, सो दिस इज 2x f of x. सो हियर वी आर लेफ्ट विथ f of x एंड देन हियर 2x जब कॉमन लिया, सो पहले तो दिस f of x हम राइटिंग हियर, एंड जब यहाँ से आपने 2x कॉमन लिया, सो इट विल बी x, f of x is already taken common, so this is f dash x which is equal to 0. I hope you are comfortable so far with this much information conveyed to you. I hope you realize x 0 नहीं हो सकता है और f of x 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने फंक्शन के डोमेन और रेंज की डेफिनेशन में कहा था दैट 0 इज नॉट इंक्लूडेड, एंड x की वैल्यू 0 होना या f of x की वैल्यू या f of t की वैल्यू या f of t की वैल्यू 0 होना इज नॉट अलाउड. विद दैट अगर मैं यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूँ, कैन आई से इट्स नथिंग बट व्हाट, f of x is equals to x f dash x. I hope you are getting that. इसके अलावा कैन आई राइट दिस थिंग एज वेल कि अगर मैं x को इधर लाऊँ, f of x को इधर लाऊँ, ध्यान से देखना. यस,
मैं x को इधर ला रहा हूँ, f of x को इधर ला रहा हूँ, so this is 1 upon x is equals to f dash x upon f of x, right? What I do next is मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, so I'm putting the sign of integration here and I'm going to put the sign of integration on the other side as well. You just need to give me a moment. This is going to be dx. There also I'm putting the sign of integration. So I hope you're realizing from a question based on limits, continuity and differentiability, now this question has become a question on डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट? नाउ अगर मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करता हूँ, सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में इज गोइंग टू बी log x, so this is going to be ln x, and here on the other side I hope you understand x पॉजिटिव होना चाहिए, that's the condition we have, और anyway x पॉजिटिव ही होगा क्योंकि उसका डोमेन 0 से बड़ा है, राइट? और रेंज भी 0 से बड़ी है. आई होप यू नो अगर मैं f of x को थोड़ी देर के लिए t कहूँ या लेट्स से k, तो f dash x dx will be dk, so this is 1 upon k. 1 upon k का इंटीग्रेशन इज log k, और k की वैल्यू जब आप रिप्लेस करेंगे सो दैट विल बी f of x. तो यहाँ पे इट विल बी ln ऑफ mod of f of x, राइट, प्लस c. अब एक और इसने खास बात कही थी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब आप f of 1 रखते हैं, मतलब जब आप x की जगह 1 रखते हैं तो f of 1 कितना होता है e, यानी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं x को 1 से और f of 1 को e से रिप्लेस करूँगा. सो बहुत ध्यान से सुनेंगे इसकी चीज़ें. ln 1 is 0, we all know that. Here this is going to be ln of f of 1, तो ln of e. I hope I'm not confusing anyone. I hope चीज़ें हम easily work out कर ले रहे हैं. So this is f of 1. f of 1 is going to be e. ln of e is 1. This is ln x, right? I hope x की वैल्यू 1 ही दी है उसने. Let me just recheck. Yes, x का वैल्यू 1 ही दी है, तो ln 1 will be 0. Now this is plus c. तो यहाँ से c की जो वैल्यू निकल के आ रही है that is -1. I hope you all are not getting confused with whatever I've written so far. अब अगर मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँ, so यहाँ से इस फंक्शन को if I rewrite, this function is going to be clearly ln x, right? ln of mod of x is equals to ln of mod of f of x minus 1. That's the function, original function we have. Now वो पूछ क्या रहा है वो ध्यान से. Can I do one more thing? अगर मैं यहाँ से f of x को redefine करना चाहूँ, चलो छोड़ो, सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं क्लास. What we'll do is f of x की वैल्यू जब 1 है तो x की क्या वैल्यू वो ये पूछ रहे हैं, तो f of x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्लास. f of x की जब आप वैल्यू 1 रखेंगे, सो दिस इज 1 minus 1 is 0. तो आई होप यू आर रियलाइजिंग x की वैल्यू इज गोइंग टू बी 1. आई होप आई एम नॉट कमिटिंग एनी एरर. लेट मी जस्ट रीचेक एवरीथिंग, क्योंकि कुछ शायद मैं गड़बड़ कर रहा हूँ. लेट मी जस्ट री-वेरीफाई एवरीथिंग हियर. So basically when you solve this further, I think yes we are going absolutely right, I believe. So जब इसे आप बस फाइनली सिंप्लीफाई करिए, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जब f of x 1 है तो x की क्या वैल्यू होगी, और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो दिस इज गोइंग टू बी ln ऑफ mod ऑफ x. अगर मैं ln ऑफ 1 लेता हूँ तो वो होता है 0, तो 0 minus 1 is 0. अब ln ऑफ mod ऑफ x का मतलब अगर मैं एंटी लॉग लूँ, so it should be e to the power, e is equals to x to the power minus 1, right? I hope हम सही कर रहे हैं यहाँ पर इसे. Let me just rewrite this equation in a more simplified version. ये step जो मैंने skip किए वो आपके लिए मैं लिख देता हूँ so that you understand it better. See, what do we have? ln of mod of x is equals to -1. I hope you understand. ln of mod of x मतलब ये log of base e है जो कि -1 के इक्वल है. यहाँ से मैं ये conclude कर सकता हूँ कि mod of x will be equal to e to the power -1. I hope you know anti log कैसे लिया जाता है. अगर आपके पास लिखा है log b base a is equals to let's say k. So that means that this base should be raised to this power so that it will result into this, which means it can be written as a to the power k is equals to b. That's exactly what I have done here. E raised to the power -1 is equals to mod x. So mod x turns out to be 1 upon e. यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है क्लास, plus -1 by e. But I hope you have realized -1 by e is again an unacceptable value क्योंकि यहाँ पे इसका डोमेन ही सारी पॉजिटिव वैल्यू है. So the answer should be 1 by e. That's option D for you. I hope this question is clearly understood by everyone. With that, let's try another question here. Just give me a second, everyone. I'm bringing the next question in a while. Alright, students, I hope you all can see the next question right there in front of you on the screen. What are we given in this question? That here we are given, or first of all asked, the variance of the following frequency distribution. Now the frequency distribution is 0, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. हालांकि इसका frequency is 2, इसका is unknown and that is 2. और एक और बात कही जा रही है, रादर वेरिएंस पूछा नहीं है, वेरिएंस दिया है और वो x की वैल्यू पूछ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई स्टार्ट डिस्कसिंग, आई होप यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस रिमेन्स क्वाइट सिंपल. आई होप यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन. मतलब अगर ये मुझे 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम तो ये करूँगा
कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये जो क्लास दी है, इस क्लास की एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लूँगा और हमने सीखा है कि हम इसका एवरेज ले लेते हैं, यानी 10 to 20 को अगर मैं रीडिफाइन करूँ तो आई कैन राइट एज दिस 10 + 20 30, 30/2 is 15, so this is going to be 15, right? That's your xi. Well, that's 15. और अगर इसी के करस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी देखूँ, that is what we are given as 2. Similarly, अगर मैं यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ, so that's 20 + 30 which is 50, 50/2 is 25. 25 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट वी आर सपोज टू फिगर आउट, दैट्स x. 30 और 40 70, 70 का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 30, मतलब फ्रीक्वेंसी क्लास इज 35 अगर उसका मैं एवरेज लूँ तो, and the frequency distribution is 2. What I'm trying to convey here is कि मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू से इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, सो दैट ये जो बड़े बड़े नंबर से 15, 25 और 35 ये छोटे बन जाएं. Why am I doing that? क्योंकि जब आप वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको xi square into fi करना होगा, and that's where you'll find it troublesome. So I'm repeating my words कि ये जो हमारा क्लास है, ये क्लास इसमें जो वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट होता है अगर मैं इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दूँ, मतलब 15, 25 और 35 के बजाय इफ आई टेक सम अदर वैल्यूज. फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, आई एम जस्ट taking a difference. Let's take any value and the best value which suits here is 15, 25 और 35 के closest जो बीच में सबसे पास की वैल्यू है, that's 25. So what I'm going to do is मैं तीनों वैल्यू में से 25 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. So when you do that, 15 minus 25 is -10, 25 minus 25 is 0, and 35 minus 25 is 10. So that's how you simplify this, and that will help you in getting the answer more easily. वो calculation को आसान बना देगा, right? Similarly, what do we have here? We have frequency distribution remains same, 2x and 2. Now before we solve this question, let me just quickly discuss the formula of variance with all of you. I hope you know the relationship between standard deviation and variation is quite simple. Standard deviation is nothing but the under root of variance, which is denoted by this sigma. So variance is sigma square. I hope you are comfortable with that. So अगर मैं standard हमसे पूछा जा रहा है और given है variance, तो variance का formula is given by summation of xi square dot fi. I hope you are realizing that. Divided by summation of fi. Had there been only these terms, I would have done it differently. I'll tell you उस केस में वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है. बट जब हमें क्लास और उनकी फ्रीक्वेंसी दी जाए तब क्या फॉर्मूला होता है, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग. माइनस द एवरेज. आई होप यू नो व्हाट इज एवरेज. एवरेज इज समेशन ऑफ xi fi divided by fi. That's the average जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास वाइज दिया जाए. लेट मी जस्ट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि फॉर्मूला एग्जैक्टली कैसे एग्जिस्ट करता है और चीज़ें कैसे होती हैं. मान लो मुझे कुछ टर्म्स दे दी जाएँ, x1, x2, x3 से लेके xn तक, ये कुछ जनरल टर्म्स दे दी जाएँ और इन टर्म्स का मुझसे वेरिएंस पूछा जाए. सो उस केस में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है वो सुनिएगा. दैट इज समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एवरेज ऑफ दीज टर्म्स विच इज समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर. आई होप यू आर रियलाइजिंग व्हाट डू आई मीन बाय दैट. यानी अगर मैं यहाँ से वेरिएंस निकालता या सिग्मा स्क्वायर निकालता, दैट वुड हैव बीन x1 square plus x2 square, and this would have gone on till xn square divided by number of terms minus x1 plus x2 till xn divided by n. So this is how I would have worked it out, right? Now here in this question, the changes are a little different. We, instead of just frequency or the terms, we are given their class as well. तो जब ऐसा कुछ होता है, the only thing which you do is इस बार आप उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे. सो आपकी जो क्लास है उसके स्क्वायर को आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे और फिर मतलब क्लास के स्क्वायर को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फाइनल डिवाइड करेंगे. एंड आई एम जस्ट करेक्टिंग दिस. यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा. आई एम जस्ट करेक्टिंग इट. दिस इज नथिंग बट द मॉड. जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं, दैट्स व्हाट वी आर फिगरिंग आउट हियर. नाउ दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आप सॉल्व करें इसे, स्टैटिस्टिक्स में यकीन करिए स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के आसपास ही सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व होते हैं. तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट इसका अंडर रूट, तो इस पर आप अंडर रूट लगा देंगे, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, सो दैट इज -10 का स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 2 200, सो दैट्स 200 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू x इज 0 प्लस 10 का स्क्वायर is again 100, 100 plus 2 is 200. So that's your value. Divided by सारी frequencies का sum. That's 2 plus x plus 2 which is 4 plus x. Minus. Now what do we have here? ध्यान से देखिए. अगर मैं अभी यहाँ ऐड करूँ तो -2 into 20, -2 into 10, -20 plus 0 plus 20. तो -20 plus 0 plus 20, -20 से plus 20 cancel, so 0. 0 upon 2 plus x plus 2, यानी 0 upon 4 plus x is nothing but 0. And that we are given as 50. I hope ये relation आपको समझ आ रहा है मैंने कैसे लिखा. सारे क्लासेस का स्क्वायर
हमने क्लास को थोड़ा चेंज किया है क्योंकि हमने ओरिजिन से शिफ्ट किया है, ओरिजिन को शिफ्ट किया है, और उससे वेरिएंस अफेक्ट नहीं होता है, होप यू नो दैट। अगर कोई भी एक सर्टेन वैल्यू सब्ट्रैक्ट ऐड कर दी जाए, सो वेरिएंस विल नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम दिस क्लास, मतलब इस क्लास का, इस पर्टिकुलर डेटा सेट का। दैट्स द पॉइंट है। उनको उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उनका सम किया और सारी फ्रीक्वेंसीज के सम से उसको डिवाइड किया, माइनस उसके एवरेज को सब्ट्रैक्ट किया। सो एवरेज इज नथिंग बट सारी टर्म्स इनटू उनकी फ्रीक्वेंसीज अपॉन फ्रीक्वेंसीज का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर इज 0। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से सॉल्व करें इसे, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। What do we get here finally? This is where I'm going to solve this. So this is numerator which is 400. 5 से multiply किया तो 5 into 4 200 plus 50x. I hope I'm writing this equation properly. So 50x is equals to 200. So x is nothing but 4. That's your answer. So from here, had you been asked the value of x, it would have been 4. I hope you have gotten it very clearly. With that, let's try another question, everyone. Well, here is another question I have posted in front of you. Well, this is a question which is based on permutation and combination. So you need to realize ये जो हमारा algebra है, P and C, probability, matrices and determinants, इन सब से भी questions पूछे जाते हैं. So these are also some of the most important topics. Now, I hope you can see this question right there on the screen. The question reads as that a test contains 6 MCQs, each having 4 alternatives, of which only one is correct. Then the number of ways in which a candidate answers all 6 questions such that exactly 4 of the answers are correct. Now, I hope you're realizing that's a very simple question. Total, I have 6 questions which are MCQ based, out of which I am supposed to mark only 4 questions correctly. So first of all, अगर आपको 4 questions correctly mark करने हैं, तो out of those 6 questions, aren't you supposed to select 4 questions? तो पहले तो 6 में से मैं 4 questions select करूँगा, और जब 6 में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, उन चारों क्वेश्चंस को सही मार्क करने के कितने तरीके, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको अगर इनको सही तरीके से मार्क करना है तो मार्क करने के लिए 4 ऑप्शन है, बट अगर सही तरीके से मार्क करना है तो उसके लिए एक ही चॉइस है। मतलब अगर ऑप्शन क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन। अब आप एक बात समझो क्लास, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th क्वेश्चन को सही से मार्क करना चाहते हो, मे बी ऑब्वियसली सेकंड क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, बट उनमें से एक ही चॉइस करेक्ट होगी ना। सो सेकंड क्वेश्चन कैन बी मार्क्ड करेक्टली इन वन वे ओनली। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी एक ही तरीके से, ये क्वेश्चन भी एक ही तरीके से, एंड ये क्वेश्चन भी एक ही तरीके से। सो इन 4 क्वेश्चंस को सही तरीके से मार्क करने के द वेज विल बी 1 into 1 into 1 which is 1 बेसिकली। हाउएवर आपको इंश्योर करना है कि आपको एग्जैक्टली 4 ही क्वेश्चन सही तरीके से करने हैं, यानी अब आपको 2 क्वेश्चंस गलत तरीके से करने होंगे, और 2 क्वेश्चंस गलत तरीके से करने के तरीके, अब 1 को ऑब्वियसली 1 में एक ऑप्शन सही होगा तो बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। सो उन 3 ऑप्शंस को मार्क करने के तरीके विल बी 3। सिमिलरली इस 6th क्वेश्चन को भी गलत तरीके से मार्क करने के देयर आर 3 वेज। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट exactly 4 questions correctly. I hope you can simplify this. How do you see this as? 6c4 can be written as 6c2. 3 square is nothing. 6c2 will be 6 into 5 divided by 2 into 1 into 9. So 2 ka 6 is 3 times, and from here you can get the answer. 9 into 5 is 45. 45 ka triple is 90 plus 45 is 135. That should be the answer. With that, I hope you have understood कि JEE पेपर 2 B.Arch एग्जामिनेशन में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल क्या होता है और इनके लिए कैसे तैयारी की जाती है। ऑल आई एम सजेस्टिंग इज पास्ट ईयर्स JEE मेंस के या तो B.Arch के क्वेश्चन सॉल्व करिए, यू विल गेट दी क्लैरिटी कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड ड्यू टू पैंडेमिक थिंग्स में चेंज, तो हो सकता है लेवल आसान हो। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग कि लेवल आसान हो, बट फॉर द पास्ट 2 years क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा कंपैरेटिवली आसान था। सो दिस ईयर मे बी द पेपर विल स्टे सिंपलर, बट स्टिल लेट्स कवर एवरीथिंग। सो गो थ्रू ऑल द बेसिक्स, सारे कंसेप्ट पढ़िए। टफ टॉपिक से भी आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो गो थ्रू एवरीथिंग, क्योंकि क्वेश्चंस को अलग अलग टॉपिक से मर्ज और मिंगल करके पूछा जाता है। दैट्स व्हाई go through everything, read all the concepts, go through all the basics. With that, I wish you all the very best. Thank you so much.